See, as you all can see over here, I have opened this site of Flipkart and there is one coin over here. Can you see the coin over here? In this coin, it is written 1 rupee, India, 1875. Or at the back of the coin, can you see Queen Victoria? She is Queen Victoria, okay, who was our queen before we became independent. So now this coin, which is made up of silver, उसके कॉइन के ऊपर, कॉइन के फेस पे कितना वैल्यू है इस कॉइन का? व्हाट इज द ओरिजिनल एंड द बेसिक वैल्यू ऑफ दिस कॉइन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक वैल्यू? 1 rupee. सॉरी, 1 rupees. एग्जैक्टली. बट आज अगर मुझे कुछ 1 रुपी का खरीदना है तो विल आई गो विथ दिस कॉइन एंड बाय इट? Will I buy something worth ₹1 with this coin? No. Obviously, No, sir. because ये coin का क्या हो गया है, इसके जो face पे जो value है, which you can see 1 rupee, okay? आज वो 1 rupee के लिए लोग 1500 rupees देने को तैयार है. Can you see this over here? 1500 rupees is the price on Flipkart. Can you see this over here? 1500 दिख रहा है सबको? Yes or no? Yes, sir. Okay, तो Yes, sir. आज इस कॉइन का प्राइस है 1500 rupees. Although इसका बेसिक कॉस्ट वाज और बेसिक प्राइस और प्राइस एज ऑन द फेस ऑफ इट वाज ₹1. तो यहाँ पे ये जो कॉइन है उसके जो फेस पे जो वैल्यू है वो है ₹1. बट आज अगर कोई इस कॉइन को खरीदना चाहता है तो वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करता है, विच इज नोन एज प्रीमियम ऑफ ₹1499. तो टोटल ₹1500 लोग पे करने को तैयार है. तो ये जो बेसिक वैल्यू के ऊपर जो लोग हमें पे करने को तैयार है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम. यू अग्री विथ मी? प्रीमियम क्या है पता चला? कि प्रीमियम में बिक रहा है. ओके, एक टाइम था जब बजाज स्कूटर was a very big luxury and they were sold on premium. कि किसी को स्कूटर खरीदना है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे, एक टाइम था. तो प्रीमियम यानी समथिंग मोर देन द बेसिक वैल्यू और द फेस वैल्यू. नाउ जैसे ये कॉइन का कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा बजाज स्कूटर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू सेल ऑन अ प्रीमियम. Okay, even Maruti cars used to sell on a premium. Cars were not available. Cars were not available, so we people had to pay premium. Now, similarly, when we come for shares, now we are a company, okay, and we want to issue shares. Now हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू है ₹10. 10 rupees face value. Now you understood the meaning of face value. Face value यानी basic value or the value on the face of the share. Now you will say, sir, ये value on the face of the share, तो शेयर का चेहरा कहाँ दिखता है? तो एक टाइम था जब शेयर was a physical piece of paper. I still have a share, one share of a company known as Rawalgaon Sugar, okay, on paper, as a paper format, okay. I still have it. I have not dematerialized it, demat नहीं किया है, क्योंकि मुझे चाहिए कि एक शेयर मेरे पास ऐसा हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, हैंड रिटन शेयर है वो. तो वो शेयर के ऊपर लिखा है फेस वैल्यू ₹10. Understood this?
तो face value is the basic value of the share. Understood what is the basic value? And if people are ready to pay something more to me than the basic value, that is known as premium. So in case of company also, in case of company also, what what the companies do is when they carry a very good repute, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था कि माझागांव बताया था तुम्हें, ये माझागांव का आईपीओ आया था, माझागांव डॉक लिमिटेड का आईपीओ आया था, उसका फेस वैल्यू है ₹10, बट कंपनी गेव द शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹135. So total amount what I had to pay was ₹145. तो ये जो एनीथिंग मोर देन द बेसिक वैल्यू या फेस वैल्यू व्हाट कंपनी टेक्स फ्रॉम द शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ आईपीओ is known as premium. Okay, so this premium, say for example, is of 20 rupees, so now the shareholders will have to pay rupees 30. So 10 is the face value and 20 is the premium. Now always remember, face value से बनता है capital of the company, फेस वैल्यू से बनता है कैपिटल ऑफ द कंपनी. प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड टू अ अकाउंट known as securities premium account or securities premium reserve account. Now मेरा जो शेयर है वो 10 रुपीज का शेयर है, बट अगर पब्लिक मुझे उसके लिए 30 रुपए देना चाहते हैं तो why should I have a problem? I should capitalize on my goodwill, on my repute, on my creditability. So that's the reason why companies issue shares at a premium. ये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ले लो. और पब्लिक भी क्या सोचती है, सो लेस नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय. नाउ व्हेन you all know, when supply is less, demand is more, the price will rise, people are ready to pay premium. ऐसा ही हुआ था 444 करोड़ के इश्यू के लिए 70,000 करोड़ कलेक्ट हुए थे. For this company, Mazaga, 157 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, यानी एक शेयर के पीछे 157 पीपल अप्लाइड. मानते हो कि कंपनी डिजर्व्स टू गेट अ प्रीमियम? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? So when the resources are scarce, demand is more, there will be premium. Same applies for shares, and that is why companies issue shares at a premium. सबको ये concept पता चल गया? Okay, now किसी को कोई डाउट? ऐसा है ना, लोगों को कॉइन कलेक्शन का बहुत शौक होता है. ओके, पीपल हैव अ हॉबी ऑफ कॉइन कलेक्शन. और तो कॉइन कलेक्शन वो क्यों करते हैं कि आज हमने कॉइन लिया, ओके, मान लो 5 रुपी का कॉइन है, हो सकता है ये 5 रुपी का कॉइन आफ्टर 20 years 30 years बिकम अ रेयर कॉइन, एंड ये 5 विल फेच समथिंग मोर. तो लोग उसका काम करते हैं. when you go to if you go to OLX and you write okay old coins, तो तुम्हें बहुत सारा लिस्टिंग मिलेगा. तो ये सब क्या हो रहा है? जस्ट एग्जाम्पल, ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीमियम. कि एक होता है कॉइन के ऊपर का फेस वैल्यू जो उसका बेसिक वैल्यू था, और एक होता है आज की सिचुएशन से लोग एक्स्ट्रा देने को तैयार है. जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम इन केस ऑफ शेयर्स. नाउ come to the textbook,
पेज नंबर 20. As you can see over here, issue of shares at a premium. Please underline, when shares are issued at a premium, amount received in excess of face value. Now you all understood what is face value. Face value is the basic value or basic cost of the share is credited to a separate account as per Companies Act. Such amount is carried to credited to security premium account or securities premium reserve account. Now, following points are to be kept in mind relating to security premium. Now, ये प्रीमियम का पैसा पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर के पास कब मंगा सकती है? So it can be called along with share application or allotment, or at the time of application and allotment, or at the time of call, separately or all together. यानी प्रीमियम का जो पैसा है वो फेस वैल्यू के साथ एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या कॉल पे, या फिर एप्लीकेशन पे पूरा मंगा लिया, अलॉटमेंट पे पूरा मंगा दिया, या कॉल के टाइम पूरा मंगा दिया. वी आर एट आवर ओन लिबर्टी. Now, there is no legal restriction on issue of shares at a premium. अगर लोग प्रीमियम देने को तैयार है तो गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है. Now, premium, this is important point. This is important. You have to keep this in mind कि सर ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, ये जो एक्स्ट्रा मनी शेयर होल्डर के पास से कंपनी को मिल रहा है, वो कैसा प्रॉफिट है? So it is a capital profit and not a revenue profit. Not a revenue profit. So it is a capital profit. You have to remember it is a capital profit. Got it, all of you? Because a one time है, it's not recurring in nature. It is not out of trading of goods or manufacturing of goods or out of the main activity of the business. Now, balance of security premium. Now, security premium को कहाँ दिखाना है? Again, important, because we will be doing format of company final accounts. There you should know where does the premium go. So it goes to equity and liability part of balance sheet under the head reserves and surplus as security premium reserve. This is also important. Now, amount of security premium cannot be utilized for payment of dividend in cash. मेरे पास जो प्रीमियम का पैसा आया वो मैं मेरे शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड दे सकता नहीं. अंडरस्टूड दिस इज द रिस्ट्रिक्शन. नाउ, तो अगर ये पैसा हम शेयर होल्डर को नहीं दे सकते हैं वापस, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. Purposes are writing of preliminary expense, initial expense of the company, writing of expense, commission, discount allowed on issue of shares or debentures of company, and third is the most important. तुम्हें आगे पढ़ाई में भी आएगा, फॉर इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी इस अमाउंट से बोनस शेयर्स इश्यू कर सकती है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल on redemption of redeemable preference shares. We will see this in the next chapter कि redeemable debentures क्या है. वैसे ही redeemable preference shares है, यानी हमने पैसा लिया है
पर कुछ समय बाद हमें वो पैसा वापस करना पड़ता है। तो जब वो पैसा वापस करने के टाइम पे कुछ हमें एक्स्ट्रा देना है तो हम ये शेयर प्रीमियम अकाउंट से उसको यूज कर सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड फिफ्थ, वेरी इंटरेस्टिंग, फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। TCS ने रिसेंटली अनाउंस किया कि दे विल बाय बैक देयर ओन शेयर्स एट ₹3000। 3000 रुपए में वो खुद, कंपनी खुद अपने शेयर्स खरीदेगी। नाउ तुम्हें लगेगा कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए है कि कंपनी के पास बहुत सारा फंड्स है, तो कंपनी चाहता है कि अपने शेयर्स खरीद के अपना शेयर होल्डिंग कम कर, तो कंपनी बाय बैक्स इट्स ओन शेयर्स। ओके, ये सब पूरा एडवांस अकाउंट्स में आएगा। व्हेन यू डू फर्दर कोर्सेज इन योर फर्दर एकेडमिक years, you will learn all these things in detail. Right now I don't want to get much into detail, okay, because our focus is not this. This is just for your knowledge and for the theory questions कि बाईबैक यानी क्या, कि कंपनी खुद अपने शेयर खरीद रही है। गवर्नमेंट के परमिशन लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं इच्छा हुआ तो चलो खरीद लो अपने शेयर्स। Okay, there is a process. When you will study Companies Act, you will come to know what are the what are the things to be followed to buy back one's own shares. Okay, now कर लिया सबने mark? Now let's go through the journal entries for this. Now journal entry के लिए you have to remember, always remember. See, there are basically how many entry you pass. First entry you pass for bank to equity share application account. Second, equity share application to equity share capital. Second is equity share capital. Then third is you call allotment and transfer it to equity share capital. Then fourth is bank to allotment. Fifth is final call or first call to equity share capital. Now remember this, जो भी एंट्रीज में जो भी एंट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो सब एंट्रीज में, सो सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फिफ्थ एंट्री, सेवेंथ एंट्री, अगर फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल अलग है तो जहां पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वहां पे तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करना है। सो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम will come together. This both will always come together. Capital will be credited and premium will also be credited. You can see your textbook page number 21. Page number 21. Over here, you can see in the second entry, share capital and premium together. And over here on share call,
again share capital and premium together. So always remember this, capital will be credited and premium will also be credited along with it. Now why credited? Because it is our income, so we credit it. What type of income is this? It is a capital profit. It's a capital income, it's a capital profit. It will always be credited at the time of issue of shares. Got it, all of you? Let's go to now some question number question number 9. Nanavati Limited of Junagadh. Now question number 9. Nanavati Limited of Junagadh issued 3 lakh equity share of 10 each at a premium of rupees 5 per share. Please underline this. 3 lakh equity shares of 10 each. So 10 is the face value and premium of rupees 5 per share. So shareholders say total we will take is 15 rupees. Amount was called up as under on application 4 per share, on allotment 8 per share including premium. तो ब्रैकेट में लिख दो इसमें फेस वैल्यू कितना, प्रीमियम है रुपीज 5, सो फेस वैल्यू है 3 प्लस प्रीमियम है रुपीज 5. फाइनल कॉल 3 पर शेयर. सो टोटल कर लेते हैं. ऑलवेज हैव अ चेक बिकॉज फेस वैल्यू से बनेगा कैपिटल और प्रीमियम विल गो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सो 4 plus 3 7 plus 3 10 and 5 is the premium. Now company received application for 3,50,000 shares. Excess application were rejected and money paid thereon was refunded to applicants. All the sum due were received in full except allotment and final call on 3,000 equity shares held by Ishira. Past journal entries in the books of the company. So let's write the heading journal entries in the books of Nanavati Limited. Textbook page number 59. Question number 9. Now let's do the working. Now working is very important. Okay. Now face value. We have application, allotment and final call. So I'm deleting this first call. We don't need it over here. Now application pay rupees 4 per share. Allotment pay 3 per share plus premium. Premium is of rupees 5 and then final call is also 3 per share. Now total comes to 10 rupees. Total comes to 10 rupees. Premium is of rupees 5. Now what we have to see at every level, on application we are collecting 4, on allotment rupees 8, on final call rupees 3. Now application shares 3,50,000 and we can issue maximum 3 lakh shares. So refund of 50,000 shares. We have Ishira
who did not pay 3,000 shares pay allotment and 3,000 shares pay final call. Please do the working. Now ये 3,000 3,000 6,000 नहीं है, ये 3,000 on allotment और वही 3,000 shares पे we did not receive the final call. Please do this working. Working is very important. Do the working, then only start the sum. Now, first we start with the application. We received application for 3,50,000 shares. So here we don't write the date, we write the order of the entry. So first we received the money. So bank account for how many shares? 3,50,000 shares into rupees 4 at the time of application. So it is 14 lakhs to equity share application account. 14 lakh. Second, narrations you write as your homework. Okay, when you do this sum once again, along with that you write narrations. Now share application आ गया. अब हमने एप्लीकेशन को एनालाइज किया, स्क्रूटिनाइज किया, एंड देन उसमें से हमने हमारे 3 लाख शेयर होल्डर्स डिसाइड कर दिए. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो एक टेम्पररी अकाउंट हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे डेबिट with 14 lakhs to equity share capital account. Capital के लिए maximum shares what we can issue are 3 lakhs shares into rupees 4. So 12 lakhs and we refund the amount to those whose applications were rejected. So to bank account. 50,000 equity shares into rupees 4. 2 lakhs. If you have any doubt in any of the entry, raise your hand so that I can solve it at that stage itself. Written the entries. Should I go to the next entry now? Okay. Now, application is done. Now we go for allotment. Now, on allotment, we are asking for 3 rupees as our face value and 5 rupees as a premium. So total we are asking rupees 8. So over here, when we are calling the amount, we will call rupees 8 from our shareholders. So equity share allotment account, we write in the bracket 3 lakh shares into rupees 8. Debit
24 lakhs. 2. Now we know that they are going to be our shareholders, so we transfer that amount to capital, to equity share capital account. Capital always with the face value. So what is the face value? Face value is rupees 3. So 3 lakh into 3 is 9 lakhs. And 2. Now capital के साथ we also got, we are asking for premium. So to equity share premium, to securities premium account, to securities premium account, 3 lakhs into rupees 5, 15 lakhs. Security premium and equity capital will always be together, always together at the time of shares. Got it, all of you? Any doubt? Any doubt, any one of you? Nice. Now, fourth one, bank account debit. Now, bank account may, now on allotment, you call the allotment amount on 3 lakh shares, but this person, Ishira, did not pay allotment on 3,000 shares. So we receive allotment on 3 lakh shares minus 3,000 shares is equal to 2,97,000 shares into rupees 8, because we are asking for 8 rupees from our shareholder. Debit. What's the amount now? 2,97,000 into 3. So 8 lakh into 8, sorry, 2,97,000 into 8, which comes to 23 lakh 76,000. 23 lakh 76,000. 2. Now we will not use calls in areas. We will directly write to equity share allotment account. 23 lakh 76,000. So the difference will automatically be adjusted as calls in areas. We will not use calls in areas account. Fifth, now allotment is done. Final call. Now we call final call equity share, final call account 3 lakh shares into rupees 3, 9 lakhs to equity share capital, capital always with the face value.
9 lakhs. So we are calling 3 per share from our shareholders holding 3 lakh shares. Now, sixth, when the money started coming, again we did not receive final call money on 3,000 shares which were held by Ishira. So again, bank account debit, amount is 3 lakh shares minus 3,000 shares, which is equal to 2,97,000 shares into rupees 3. It comes to 8,91,000. To equity share final call account, 8,91,000. We will not use calls in arrears. We'll do it directly. So that's it for the sum. Close it and do the totals. 93,67,000. Right, total, double underline. Any doubt, anyone? So this is the concept of a premium. Now always you do the working like this. This total column is the amount what we collect from our shareholders. Now on allotment, when we did this, once again, come over here. In allotment, we called for rupees 8, that is total of face value plus premium. And the face value will be transferred to capital and premium will be transferred to premium account. Is this clear? Okay.